what is out there. And the scholar always gives a framework, and he takes an event, fit in that framework, and with the help of framework, he explains the event which is occurring in front of him. Now we are observing competition in international system. And that competition is in between China and United States of America. And how can we explain this competition? We can give our analysis with the help of these three levels, known as level of analysis in international relations, in international politics, which is individual, state, systemic. Now it's up to you whether you want to study a single tree or a whole of the jungle. It's up to you whether you want to understand the phenomena at micro level or at macro level. आपकी मर्जी है कि एक फर्द वाहिद की साइकी को समझकर फैसले को समझें, या पूरी रियासत की साइकी को या उसमें जो उसके वेरिएबल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझकर उस रियासत के फैसले को समझें। तीनों लेवल्स जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये इंडिविजुअल है। जब इंडिविजुअल लेवल पे आप एनालिसिस करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? साइकी ऑफ द डिसीजन मेकर, उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फ्रेंडशिप, बिलीफ, फैमिली बैकग्राउंड, उसका ट्रेंड, वेदर ही इज कंजर्वेटिव और लिबरल। अगर आप रियासती बुनियाद पे इफ यू वांट टू हैव अ स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस, आप क्या करोगे? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स। क्या होती है इसकी? जियोग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री, कल्चर, political system. Now look at, for instance, individual characteristics. ये मुख्तलिफ हैं, and the state's characteristics ये मुख्तलिफ हैं. If you come to the systemic level, तो systemic level पे आपको quite different characteristics मिलेंगे. मिसाल के तौर पे power hierarchy, उसमें hierarchy में कौन आ रहा है? Then distribution of power, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है या बायपोलर है. सो These are three different levels. It's up to you कि आप एक होने वाले वाक़े को इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस से समझ रहे हैं, या स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस समझ रहे हैं, या सिस्टेमिक लेवल ऑफ एनालिसिस समझ रहे हैं. लेकिन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं. All these three levels, they have exclusive characteristics. When I say exclusive, what does it mean? It means कि एक के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे में नहीं पाए जा रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, लिहाजा तीनों की एनालिसिस भी मुख्तलिफ होगी. फाइन. मिसाल के तौर पे अगर आपने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वीजा भी अफगानिस्तान समझना है और आपने इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस पे जाना है, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी पर्सनालिटी ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन.
और अगर आपने रियासती तौर पे जाना है, फिर अमेरिका की ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री, बिलीफ सिस्टम, कल्चर एंड देयर स्टेट स्ट्रक्चर, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल सेटअप, वो सारा समझना है। एंड अगर आपने सिस्टेमिक लेवल पे समझना है, तो देन यू हैव टू गो टू द पोजीशन ऑफ द यूएस इन सिस्टम। सिस्टेमिक लेवल पे फॉर इंस्टेंस Kenneth Watts कहता है, it is system that influences the external behavior of a state. And he raises a question, why all smaller nations have a similar foreign policy? कि अगर अमेरिका या सिस्टम कहता है कि दहशतगर्दी से खतरा है सिक्योरिटी को, तो सारी रियासतें कहती हैं दहशतगर्दी से खतरा है। Since America is a dominant theme in international politics, if America decides what is the definition of terrorism, and terrorism is not acceptable in any form and any manifestation, तो पाकिस्तान भी कहेगा किसी फॉर्म और किसी मैनिफेस्टेशन में टेररिज्म काबिल कबूल नहीं है। Why? It is the impact of system on the external behavior of states. सो सिस्टम में जब आपने देखना है तो सिस्टेमिक लेवल ऑफ एनालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं। हायरार्की क्या है इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलायंसेस क्या है, नेचर ऑफ द सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आपने सिस्टम को देखना है। जब रियासत के तौर पे देखना है, तो व्हाई अमेरिका इज सपोर्टिंग इजराइल फॉर इंस्टेंस, then you need to understand the very characteristics of the American state, including its belief system. और उनका जो फलसफा है मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या, और वी आर द चूजन पीपल, सो वी नो व्हाट इज द ट्रूथ, सो वी नो हाउ द वर्ल्ड शुड एक्ट। हमें पता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उधर से इजरायली भी कहते हैं कि वी आर द चूजन पीपल, बाकी दे आर ऑल अदर एनिमल्स। कुछ अच्छे एनिमल्स हैं, कुछ बुरे एनिमल्स हैं। जो हमारी सपोर्ट करते हैं वो अच्छे एनिमल्स हैं, जो हमसे हमारे खिलाफ हैं बुरे एनिमल्स हैं, ठीक है। और फिर इंडिविजुअल पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एक पर्सनैलिटी के, स्पेशली इन दोज स्टेट्स जहां पे देयर इज नो डेमोक्रेसी, where there is a kingdom like Saudi Arabia, where you need to understand the very personality of Mohammed bin Salman, or in the past Saddam Hussein in Iraq, or in American case jahan pe democracy hai, some presidents are proactive presidents like President Trump, jo idaron ki nahi sunte aur apni karte hain, unpredictable hai. So you need to understand the personality of President Trump, and since you understand the personality of President Trump, therefore you can predict if Trump comes into power, he would stop all wars. यूक्रेन की जंग भी खत्म करा देगा, गजा इजराइल की भी खत्म करवा देगा, and he starts intense competition with China, और टैक्सेस और ड्यूटीज इंपोज करेगा चाइनीज कमोडिटीज के ऊपर। क्यों आप प्रेडिक्ट करते हैं? बिकॉज यू नो द पर्सनैलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। उसका बैकग्राउंड क्या है? बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है ना। व्हाइट सुप्रीमिज्म के ऊपर वो ही बिलीव्स ऑन इट। सो देयरफॉर दीज आर 3 लेवल्स। नाउ अगर हम रियासत का ले लें फॉर इंस्टेंस कि चाइना यूएस कंपटीशन, इफ वी आर टेकिंग द स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस, नाउ व्हाई यूएस हैज स्टार्टेड कंपटीशन विद चाइना? बिकॉज एनी पावर अगर वो अमेरिका की जगह पे होगा तो वो इसी किस्म का कंपटीशन करेगा, बिकॉज दैट नेशन वांट्स टू रिटेन पावर एंड पोजीशन इन इंटरनेशनल सिस्टम, और वो नहीं चाहेगा कि दूसरा पावर उसके मध्य मुकाबला के खड़ा हो जाए। कोई भी पावर हो, वो यही करता है जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है। सो अमेरिकन गोल क्या है? टू मेंटेन इट्स dominant position in international system, and they say that dominance is challenged by China. How it is challenged by China? Because their major argument is, especially argument given by John Mearsheimer,
that once Chinese economy reaches to $19 trillion and above, China would establish its own area of influence. जैसे अमेरिका का वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज अमेरिकन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, तो पूरा एशिया वुड बी द चाइनीज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड वंस स्मॉलर इकोनॉमीज would be integrated with the bigger economy of China, the political system of smaller nations would be influenced by the political system of China. Infancies, weak and fragile democracies of the smaller nations would be in danger. Because सवाल ये है यहाँ कि why do you need democracy? You need democracy to bring stability. Why do you need stability? Because stability would bring investment in the country, जिससे आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. भाई डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? बिकॉज हर कोई अपने ओपिनियन का इजहार करता है, अपना वोट देकर किसी को हुकूमत में लाता है, तो उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हो जाते हैं किसी हद तक, और वो उसको लाता है जिस उसके ख्याल में कि ये मुझसे जो मैं चाहता हूं ये वही करेगा. तो लिहाजा वो सेटिस्फाइड होता है कि मैंने चुन के लेके आया हूं, लिहाजा वही करेगा जो मैं चाहता हूं, लिहाजा स्टेबिलिटी रहती है, अमन रहता है. बट नाउ क्वेश्चन इज कि वेदर डेमोक्रेटिक इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर स्टेबल, और अनडेमोक्रेटिक चाइना इज मोर स्टेबल. इनफैक्ट चाइना इज मोर स्टेबल. एंड वंस Chinese economy is rising up, and China has become a model of modernization for the peripheral nations, middle range powers, and the developing and developed nations of Africa and Asia. So therefore, Americans, they believe that Chinese influence, economic influence, would definitely lead to Chinese political influence. But Chinese argument क्या है? Chinese argument is कि भाई हमारी 4000 साल तारीख में कभी भी हमने जाके इलाकों को कॉलोनाइज नहीं किया, हालांकि हम नेवल पावर रहे. हमारा रियल मसला इज हाउ टू फीड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन. 75,000 किलोमीटर का एक खड्डा है जिसको हमने ग़िज़ा से पुर करना है. And we don't have a time to export our political system to the peripheral nations. One. Number two, they believe that their political system is so typical that peripheral nations won't be able to adopt it, because our political system is nurtured, evolved, with its own culture, with its own historical background. उसके एक तारीखी पस मंजर है, उसके पीछे एक सकाफत है जो दूसरे मुल्कों की नहीं है. तो we are not interested to export our political system. और यहां पे सवाल ये होता है, क्या चाइना और यूएस की जो कंपटीशन है उसमें क्या अमेरिका कामयाब हो पाएगा? क्या अमेरिका एज अ चाइना को एज अ रियासत शिकस्त देना चाहता है, या उसके अंदर जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रिजीम है उसको चेंज करना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, या चाइनीज इकोनॉमी को बढ़ने से रोकना चाहता है? नाउ देयर आर 4 strengths of China deter America, and Americans, I believe, won't be able to defeat China. Number one, Chinese civilization. Consistent, long, and very powerful civilization. A civilization which is based on 4,000 years, जिसमें कोई इंटरवल नहीं है. कंसिस्टेंट, लॉन्ग, पावरफुल सिविलाइजेशन.
And that civilization has experienced many ups and downs in their life. So the crisis which is posed by the West, which is led by United States of America, is not a new crisis for the China. So therefore, this civilization is giving particular strength to China to sustain that crisis which is posed by the United States of America in the form of alliances, in the form of tariff and sanctions, or taxes on Chinese commodities, in the form of construction of particular narrative against China. So Chinese civilization is powerful to sustain it. Second important positive point or strength of China is that Chinese has very powerful emotions. Psychologically and emotionally, they are very powerful. Why? Because in the past, in 1842 to 1949, they experienced the Opium War. किस तरह से एक जंग मगरिब की तरफ से चाइना के ऊपर डाली गई, जहां पे ओपियम इंट्रोड्यूस करवा के चाइना को सुस्त रवि का शिकार किया गया, कि चाइना एज ए जाइंट, एज ए ड्रैगन, अपने नींद से न उठ पाए. So Chinese, they believe that we experienced in the past, and we know that you are doing the same. You have unleashed economic war against us. We know this. We know that you are trying to contain us to be a rising power in the world. But we know that you cannot stop us. It is not a new thing for us. In the past we experienced so. So we know how to tackle it. और फ्रॉम 1949 टू अप टिल नाउ चाइना उठ गया है, और चाइना मुस्तकिलन एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर के ऊपर आ रहा है. थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ चाइना इज इट्स एग्जॉस्टिव पॉपुलेशन. 1.4 billion people, very resourceful, very hard working. उन्होंने उसको एक सिमत, उन्हें पता है कि हमारी सिमत क्या है, हमारा हदफ क्या है. When 1.4 billion population decides that this is our target, this is our direction, तो ऐसी कौम को कोई पीछे नहीं हटा सकता, कोई रोक नहीं सकता. And this is the reason खुद अमेरिकन बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के हेड, they believe that the way Chinese सस्ता और टेक्नोलॉजिकली जो उसके अंदर प्रिसीशन है, जो सफाई है, वो जो चाइनीज प्रोड्यूस करते हैं चीज के अंदर, वो कोई और उस तरह का प्रोड्यूस नहीं करता. और रिमेंबर, जॉन मीरशाइमर बिलीव्स कि who is the major power in the world, who is the dominant power in the world. He says that there are two building blocks. One, the robust population. एक कौम के पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आबादी होनी चाहिए, जो जापान के पास नहीं है, जो अमेरिका के पास उस हद तक नहीं है, वो चाइना के पास. 1.4 billion people. If you have 1.4 billion people, it means उसमें से आपको मिलिट्री के लिए लोग आपको जबरदस्त किस्म के मिलेंगे, आपको ज्यादा मिलेंगे. आप कैजुअलिटी सेंसिटिव नहीं होंगे, जो इस वक्त इजराइल हुआ है. आम लोग इजराइल की फौज में रिपोर्ट नहीं कर रहे. एंड सेकंड इज अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ. एंड चाइना हैज अकोमुलेटेड वेल्थ स्पेशली आफ्टर 1990s, आफ्टर एन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ठीक है. और आज चाइनीज आप जीडीपी देखें, इट इज $19+ trillion इकोनॉमी. America is $24 trillion economy. America is under debt, $36 trillion under debt. $28 billion पर डे बजट का खसारा नजर आ रहा है.
और अब तो इस वक्त जो समुद्री तूफान आया है नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा के अंदर, इससे मजीद इकोनॉमी को एक झटका लगा है। और फिर यूक्रेन में वॉर, गजा इजराइल की जंग, अमेरिकन दे आर क्रिटिसाइजिंग कि आप हमारी हेल्प एंड रिलीफ के लिए जो हमें $9 बिलियन चाहिए आप नहीं भेज रहे, एंड उसी वक्त आप $7.5 बिलियन इजराइल को मदद दे रहे हैं, इकोनॉमिक एड दे रहे हैं और वेपन दे रहे हैं। चौथी चाइनीज जो स्ट्रेंथ है वो चाइनीज आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, अ सिंगल गोल एंड अ सिस्टम। और अगर आपके पास सिस्टम हो जो आपको ऑर्गेनाइज करे, आपके पास हदफ हो, डायरेक्शन क्लियर हो, और आपके पास प्लेटफॉर्म हो जहां पे आपके यहां यूनिटी पैदा हो जाए, उस कौम को आप पीछे नहीं कर सकते। नजरिया एक ऐसी चीज है, अमेरिकन नजरिया ऑफ एनलाइटनमेंट ब्रॉट अमेरिका फ्रॉम हियर टू हियर। In 1890, America became the richest and powerful nation in the world. Why? Because of its ideology. इजिप्ट कुछ नहीं था, नासिर का जो पैन अरबिज्म था, इजिप्ट को यहां से लाके यहां उसने खड़ा किया। पाकिस्तान का वजूद भी नजरिए के मरहूने मिन्नत है। अगर ये नजरिया नहीं होता, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपका एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, आपके यहाँ यूनिटी नहीं होती, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल में कामयाब नहीं होते। नजरिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ पावर। आज ईरान डटा हुआ है विद इट्स प्रॉक्सीज एंड अलाइज अगेंस्ट इजराइल एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट इज बिकॉज ऑफ ईरानियन आइडियोलॉजी। तो चाइनीज जो आइडियोलॉजी है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ पावर। सो 4 स्ट्रेंथ्स हैं। इसकी वजह से वट एवर अमेरिकन दे डू, दे वॉन्ट बी सक्सेसफुल, बिकॉज डे बाय डे चाइनीज इंफ्लुएंस इज इंक्रीजिंग। आज दुनिया ट्रेड किसके साथ करना चाहती है? चाइना के साथ। लेट मी गिव यू एग्जांपल। ऑल अमेरिकन अलाइज, साउथ अमेरिका में ब्राजील trading with China and attaching its oil resources and plan with the BRIC। और जिस वक्त ब्राजील अलाइन हो जाता है ब्रिक से, तो ब्रिक की जो कैपेसिटी है ऑयल रिसोर्सेज पे, ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज पे, वो 42 से बढ़ के 62 पे चली जाती है। सऊदी अरब is trading with China, American and another ally. UAE has become the part of BRICS. Turkey has applied for BRICS. India is a part of BRICS. Pakistan has wished to be the member of the BRIC. And already Pakistan is a member of SCO. So all major allies, Egypt, Nigeria. So दुनिया जो है वो they want to trade with China. So how can you stop China? And why they want to trade with China? Because when Chinese come, they build infrastructure. They funnel dollars, capital. They provide cheap commodities. एक तरफ अमेरिकन मोबाइल देखें, आईफोन कितना महंगा है, और दूसरी तरफ चाइनीज हवावे का देखें। एक तरफ F-35 देखें और दूसरी तरफ चाइनीज J-31 देखें। एक तरफ F-16 देखें, दूसरी तरफ चाइनीज J-10C देखें। मिलिट्री से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, जो डे टू डे अफेयर्स के अंदर या हमारी रहाइश की जो जरूरियात हैं, वो चाइनीज बड़ी सस्ती प्रोवाइड कर रहा है और बेहतरीन प्रोवाइड कर रहा है। सो द वर्ल्ड वांट्स टू हैव अ ट्रेड विद चाइना। So how can you stop China? So therefore, at the end I would say, and the system, last, मैंने individual बता दिया, state बता दिया, at systemic level we are observing transformation from unipolarity to octagonal multipolarity. When I say octagonal multipolarity, it means that not only states which are playing important role in international politics, but
non-state actors, intergovernmental organizations, and the religious groups, the cultural groups, the business groups in the form of corporations, they are also playing important role in international politics. जहां पे G7, G20 इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे SCO और ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है. जहां पे यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है, तो आसियान भी इंपॉर्टेंट है. जहां पे अगर रियासत इजराइल के तौर पे मिडिल ईस्ट में काम कर रही है और ईरान आपस में सियासत कर रहे हैं अपने गोल्स को के अहदाफ के हुसूल के लिए, तो वहां पे हशद शेबी, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह एंड हमास भी सरगर्म है. So system is not under control of the United States of America. सिस्टम में 5 वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. करेंसी किसकी चल रही है, ट्रेड सिस्टम किसका चल रहा है, सिक्योरिटी कौन डिफाइन कर रहा है, कल्चर किसका प्रमोट हो रहा है, इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है. Now global south is giving its own views of international politics. चाइनीज नैरेटिव आ रहा है, इंडियन नैरेटिव आ रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट का नैरेटिव आ रहा है. और फिर आपने देखा उसकी मिसाल कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में करारदाद किसके फेवर में आई, फलस्तीन के फेवर में. 124 nations out of 189 they voted in favor of फलस्तीन. ओनली कितने लोगों ने मुखालफत की, 42, और बहुत सारे न 42 वो थे जो एब्सटीन किया, जिन्होंने वोट नहीं किया, और बाकी 23 या 21 ममालिक थे जिन्होंने रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया. तो इसका मतलब अमेरिका इज बिकमिंग आइसोलेटेड. अमेरिका ने रशिया के खिलाफ करारदाद पेश की यूक्रेन के मसले पर. American ally did not vote in favor of American resolution. इजराइल ने नहीं दिया, इंडिया ने नहीं दिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ने नहीं दिया, ब्राजील और अर्जेंटीना ने नहीं दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया, सऊदी अरब ने नहीं दिया, यूएई ने नहीं दिया, इजिप्ट ने नहीं दिया. नाउ करेंसी, ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे अल्टरनेटिव करेंसी की ट्रेड की बात हो रही है. वाटर ट्रेड भी चल रहा है और अल्टरनेटिव पेट्रोयान की बात हो रही है. और सबसे ज्यादा उसमें सरगर्म लूला दा सिल्वा है, जो कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है. और ट्रेडिशनली ब्राजील इज एन अलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर है. और अमेरिकन की एक नजरिया है जिसको हम कहते हैं, एक डॉक्ट्राइन है जिसे हम कहते हैं मोनरो डॉक्ट्राइन, 1823 में आया. इट सेज कि अमेरिका वॉन्ट टॉलरेट interference of outsider in American backyard. कल्चर किसका प्रमोट हो रहा है, पहले आप सिर्फ अंग्रेजी सीखते थे, नाउ यू आर लर्निंग चाइनीज एज वेल. आपके अपने टेक्स्ट बुक्स वहां से आ रहे हैं, आप खुद भी बनाने की कोशिश करते हैं, अपने टेक्स्ट बुक बनाने की कोशिश करते हैं. मीडिया जो नैरेटिव मेकिंग है वो भी आ रहा है. सिक्योरिटी पैराडाइम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं. पहले सिर्फ उनकी सुनते थे, ग्लोबल नॉर्थ की, अब वो अपना पैराडाइम लेके आ रहे हैं. तो आपको एक शिफ्ट नजर आ रही है, वेयर अमेरिका इज नॉट द सोल सुपर पावर बट अदर पार्ट्स दे आर एमर्जिंग, जिसमें ज्यादा प्रोमिनेंट चाइना एंड रशिया. देखें आखिरी बात, उसके बाद आपसे सवालात लेता हूं. 3 चीजें, 3 phenomenons are coming in front of you. We are observing 3 phenomena. 1, reverse of American political and economic influence in the global system. जिसकी मैंने कई सारी मिसालें आपको दे दी. अमेरिका की रेजोल्यूशन को कोई सपोर्ट नहीं करता, उसके अपने अलाई सपोर्ट नहीं करते. Number 2, rising power, centers of rising powers, especially China and Russia, and other centers as well, जिसमें टर्की भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, even India. India is not a major power. India middle range power और major power के दरमियान में कहीं है.
Because India has robust population but not skilled population, resourceful population, and India does not have accumulation of wealth. इतनी नहीं है उसके पास दौलत के वो एक मेजर पावर की सूरत में उभरे, लेकिन मिडिल रेंज पावर से जरा ऊपर है। और तीसरा फिनोमेना है रिसर्जेंस ऑफ मिडिल रेंज पावर्स, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो नई दुनिया उभर रही है इसमें बैलेंसर का रोल प्ले करेंगे, जिस तरफ ये जाएंगे उनकी ताकत ज्यादा होगी, और उनमें ये 5 ममालिक हैं: इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट एंड सऊदी अरब। ये जिस तरफ झुकेंगे उनका पलड़ा भारी होगा। दे आर द बैलेंसर, एंड दिस इज द रीजन that now you are observing improvement in Pakistan's economy. Iran wants to buy Pakistani JF Thunder Block 3, wants Air Force cooperation. Saudis wants security cooperation and trade cooperation with Pakistan. Abhi delegation aaya hua tha. Chinese are investing in Pakistani's infrastructure. Russians are saying Pakistan is an important partner, important country in the region. So Pakistan ki significance therefore increasing day by day, because you have a military strength and your army is a professional army, जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है in terms of security and war and dealing with the crisis. मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। तो therefore हमने जो समझना है, आपने अगर चाइना यूएस कंपटीशन, तो यू हैव 3 लेवल्स: इंडिविजुअल लेवल, लीडरशिप को समझ के, उनकी साइकी को समझ के, चाइनीज प्रेसिडेंट को समझ के, अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझ के; स्टेट लेवल, जहां पे रियासत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रियासत के जो जिस तरह से फंक्शन होता है, जिस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, उसको अंडरस्टैंड करके, या सिस्टेमिक लेवल पे जाकर आप कर सकते हैं। बिकॉज दीज 3 levels आर क्वाइट एसेंशियल बिकॉज ऑफ 3 important things you need, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था। यू नीड बिकॉज डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। आई एंड हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।